Hi Nikita. Is the voice clear to you, Nikita? Hello. Okay, welcome all. We will begin once we get some more people joining in. Okay, and then we'll start. Welcome all. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, all. Is my voice clear, everyone? Yes, sir. Okay. So I have how many people? Who is by the name of Del? Nikita, Shivanshi, Sandeep, Deepak, Sandeep Dohare, and Suraj Banerjee. Okay. One more is joining. Mayuri. All right. So, good evening, everyone. My name is Ali Asgar. Okay. I'm a trainer at WSQ Tech, a digital marketing trainer. And welcome all to this session of digital marketing. We hope to have a wonderful journey together. Okay. Before I begin, okay, people are still joining. Right. Give me a quick introduction on yourself, guys. One after another. Tell me your name. Currently. Why? निफ्टी नहीं है, डिजिटल मार्केट है जो अपन वो मार्केटिंग करते हैं, रेटिंग कैसे बढ़ाना है, लाइक कैसे बनाना सब बताएंगे वो वैसा कुछ। ये इंट्रो देंगे ना अभी। Okay. Everybody's on mute now? Fair enough. So, for the ones who have joined right now and who are joining right now, let them join. So, I have Sujata and Rakhi joining in.
Okay. First and foremost, everyone, do say yes. If you can hear my voice clearly, say yes in the chat box, please. Okay, Mayuri says yes. What about the rest? Ashish says yes. Shivangshi says yes. Sandeep says yes. Who is Dell? What's your name, sir? Dell is the name of the computer. Okay, everybody is okay, cool. So you all can hear me, right? Clearly. Fair enough. Parikshit Sankhala. Welcome, Parikshit. Okay, so make sure that you rename yourself to Parikshit. Okay, don't give it Dell. Okay. Now, I am Aliasgar Babat. I am a trainer at WSQ Tech. Okay, a digital marketing trainer. And I provide trainings on, the complete digital marketing end-to-end modules. So welcome all. Before I begin, I would like to have a quick introduction about yourself. So tell me in the chat box, what are you doing currently? If you're doing a job or if you're doing a business, and why would you like to learn digital marketing? What's the objectives? And what do you expect from this training course? 3 things: your name, what are you doing currently, right? And why would you like to learn digital marketing? I would expect everyone answers in the chat box, please. Right, so I'm waiting in the chat box for the answers to come. Mayuri says she has advertising agency in Delhi. Wow. Great, Mayuri. So you want to improve your skills. Cool. Parikshit says he is a student of Central Academy, 9th class from Mandor. Fantastic. Okay. Why? Okay. So Parikshit, why would you like to learn digital marketing? What's your objective? Rest, please type in the chat box. I've muted everyone by force just to to avoid any disturbances. So whatever queries and questions you have, I would recommend type in the chat box, please, so that the session goes smoothly. Chaudhary says, beginner in digital marketing. I use digital marketing for your own business. Welcome, Chaudhary. Ashish says, I have business of women's ethnic wear. I want to do it for my business as well as for career in this, as I've done 9 years of experience in the back end. Welcome, Ashish. Okay. Rest. So we are done with Shivangshi says she's pursuing the bachelor's in electronics and communications from Jaipur and the final year. Okay. People have joined right now. Quickly type your name, what are you doing currently, and let me know why would you like to learn digital marketing in the chat box, please. Sujata is from Kolkata. Okay, welcome, Sujata. We have 15 people, huh? Okay. Well, Mayuri, fair enough. Woman is also a very good trainer. You can have a look at my sessions, right? In case you don't like it, you can definitely switch to Umar. No worries. आप वहाँ पे switch कर सकते हो, कोई issue नहीं. Sujata is a textile designer. Okay. Cool. Okay. So the objective of everyone to learn digital marketing is either 3: either to go for a job, or to promote the business, correct? Or to work as a freelancer. Am I right? Everybody has either of these 3 objectives. Either career in digital marketing, or promoting business, or working as a freelancer. Cool?
Fine. Now, so let's begin. All right. Sure, Sandeep. So, now, the target audience, okay, for digital marketing is everyone, huh? Anyone and everyone. Okay, first, language, English, Hindi, both are okay? Or has someone concern only in English or only in Hindi? Both are okay, right? Okay. So the target audience for today's seminar or webinar is, training is in fact, people who are graduates, postgraduates, professionals, MBA, businessmen, etc. Okay. Now, everybody has internet knowledge, right? People browse Google, Facebook, etc. Job seekers, startups, salespeople, marketing people, everybody can learn digital marketing. Now, agenda for today is we'll start with what is a definition of marketing. Okay. Followed by why is marketing important for businesses in today's globally high and results-driven technological world. Okay. What are the benefits of marketing? What are the 7 P's of marketing? Types of marketing? What is digital marketing? And so on. Okay. Post which we'll come to digital marketing. What are the benefits of digital marketing? What are the various digital marketing channels? What is the digital marketing process? And that's it. Okay. Now, so marketing is, how do you guys define marketing in simple terms? Yeah, no. Tell me. Okay. Type in the chat, huh? To sell a product, correct? Okay, to sell a product, that's right. Now, marketing is defined as, okay, you have 5 P's, right? First of all, you should have a product or a service, correct? After you have a product or a service, correct, people, to promote the products, right? Complete promotion, right? Absolutely correct, right? You will put up a price. Once you have a price, you will promote it, right? Once you have started your promotion, you will establish your distribution channels and you will do a lot of research. Selling strategy, correct. You will do a lot of research as to how do I make this product better? How shall I fulfill my customers' needs? Correct? Right. Advertising of a company's products in the best possible way is called as marketing. So marketing in terminology is defined as communication. Marketing is equal to communication. Right? So I am right now communicating with you. Maybe आप लोगों से बात कर रहा हूँ. So what I'm doing? I am marketing myself. Correct? I am marketing myself as a digital marketing trainer. बराबर है? So technical definition of marketing is equal to communication. Second easier definition of marketing is visibility. Unless and until you do marketing, you will not become visible to public. Isn't it? Example. Let's say I start up a electronic store in Pune, right? मैंने एक electronic showroom Pune में शुरू किया. In order to make sure the entire Pune knows about my shop, okay, Mr. Aliasgar Babat has started a shop of electronic store in Pune. I will need to do marketing, correct? If I do not do any marketing, I will not be visible. बराबर है? If I am not visible, people will not come and buy. So if I do not do marketing, how many people will come to know that I have started a shop? कितने लोगों को पता चलेगा? Hardly anyone. Correct? आजू बाजू, neighbors, ये लोगों को सिर्फ पता चलेगा कि I have started up a shop.
Rest all will not even come to know, right? So in order to make my shop famous in Pune, I need to do marketing. So marketing is nothing but communication. Marketing is nothing but making your products and services visible to people in your city, country, globally. Clear? Now, why is marketing important for every business? Number one, effective way of engaging customers, right? अगर आपको कस्टमर के साथ एंगेज करना है, बातचीत बढ़ानी है, रैपो बढ़ाना है, कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ानी है, marketing is an effective way to engage people by giving offers, discounts, conducting events, exhibitions, etc. Correct? If you want to maintain your company's reputation, marketing will help you, right? You become a brand. It will help you to build up a relationship between you and your customer. It's one of the most fantastic communication channels. Without marketing, you will not be able to communicate only. बराबर है, बिना marketing के आप communicate ही नहीं कर पाओगे कि मेरा business, products और service क्या है, किसी को पता ही नहीं चलेगा. And finally, the goal of the entire business of doing marketing is WS Cube Tech is doing marketing. Why? To boost sales. Amazon, Flipkart, Snapdeal, Paytm, all the brands, right? They do marketing for only one purpose, to boost sales, right? The ultimate goal is to get the return on investment and to get ROI. ROI is how much you have spent on marketing, how much investment you have got. Okay, and you will only get ROI if you get sales. Barabar? Clear, everyone? You will only get ROI only if you have sales, right? If your sales team do not perform, no matter how wonderfully I do marketing, but if sales is not happening, it's a waste of time. So in order for businesses to keep their customers engaged, in order for businesses to drive engagement, you have to do marketing. Parikshit, ROI is return on investment. For example, let's say आपने Times of India में ad दिया, okay? Now Times of India will charge you say 10 लाख रुपए ad दिखाने के लिए front page पे, ये आपका investment हुआ, correct? Now ad दिखाने के बाद you will like to have some returns coming in, बराबर है? Obviously, so let's say मैंने अगर electronic showroom का ad दे दिया Times of India में, if I give up a electronic showroom ad in Times of India, I would expect some returns coming back from it in terms of sales. People should come at my shop, people should buy, people should have a look at my different products in electronic store like televisions, washing machines, etc. Right? And they should buy. Ultimate goal is purchase. Only if they purchase, I can get my ROI. That I invested 10 lakhs. How much money I have made now? Clear, Parikshit? Please say yes in the chat box if it's clear. Correct? ROI is whatever investment you make in advertising or in marketing, how much money you got back, you will calculate, right? So if I'm investing 10 lakhs for doing marketing, if I'm getting 20 lakhs, 30 lakhs coming back, it's good for me, right? Or else, okay, if I'm getting only 5 lakh sales, but I've invested 5 lakh rupees in marketing, 5 lakh rupees is my loss, correct? So I would conclude that marketing did not work. Something went wrong somewhere, which you will analyze. This is the general term of marketing, general marketing concept. Correct? So because of these advantages, businesses will do marketing. They have no other option. Okay, Umair. So businesses को marketing करने के लिए बराबर है. Advantages of marketing gain करने के लिए, business के sales बढ़ाने के लिए, they will have to do marketing. तो ROI का मीनिंग उमेर ये है कि मैंने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, तो मुझे कितना रिटर्न्स वापस आए, कितने मुझे सेल्स मिले. 10 लाख के 20 लाख मेरे प्रोडक्ट सेल्स हुए, ओके, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ. ऑल दिस इज ROI. नाउ बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग. अगर आप मार्केटिंग करोगे, राइट, सो यू बिकम अ ब्रांड, करेक्ट? इट्स अ ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन.
your business will become a recognized brand. You see the most famous brands here, we all know it, right? Duracell, Lego, Netflix, Amazon, Cadbury, eBay, Nike. शूज खरीदना है नाइकी के पास जाओ, करेक्ट? कुछ भी चीज ऑनलाइन खरीदनी है Amazon, फ्लिपकार्ट. क्यों? Because these people consistently communicated to you about their business. बार बार उन्होंने आपको एड्स दिखा के, वीडियोस दिखा के प्रमोशन किया, तब जाके आपके दिमाग में बात बैठ गई अभी कि whatever I need to buy online, I need to go to Amazon only. Whatever I want to buy offline, okay, I will go to Lego, Mini, etc. Correct? Brand recognition, first advantage. Second advantage, if you do marketing, you will get ideas coming into your mind because companies will give you feedback, customers will give you the feedback. Sir, ये टीवी में ये फीचर अवेलेबल नहीं है. Okay, Ultra 4K टीवी में टच स्क्रीन अवेलेबल फीचर नहीं है सर. Correct? So you will think, okay, let's develop this particular feature and satisfy the customer. So marketing will give you new product ideas. It will help you to improve your product and services. Correct? Marketing will ultimately help you to increase sales, which is the end goal. हर एक marketing का end goal क्या होगा? इतने sales हुए. Example, electronic showroom में 1000 television थे मेरे पास. Okay, I invested 10 lakh rupees in Times of India ad. 1000 में से कितने बिके? Correct? So marketing brings increased sales in the way of high rates of customer traffic. Traffic यानी कितने लोग आपकी advertisement देखने के बाद they came to your shop. All are clear? Good advantages, right? So everybody agrees now we should do marketing. Yes, we all agree now that we should do marketing. Correct? Without marketing, we cannot do any business in the world. Right? Now, cost savings. As your sales peak and brand awareness, right? The moment you become a brand, correct? फिर आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, बराबर? आज के जमाने में Amazon, Flipkart की इतनी एड्स नहीं आएगी. कभी-कभी आएगी, दिवाली पे, बिग बैंग सेल, क्रिसमस पे, होली पे, right? They will only promote on festivals because now they are a brand, right? They will not, so daily आपको एड्स नहीं दिखेगी Amazon की या Flipkart की, न्यूज़पेपर्स वगैरह. Why? Because they are a brand right now. They will not spend much money. Okay, the cost is controlled. Advertising cost is controlled. Sales are high. So as and when you become brand, your marketing efforts results in decline in cost savings and expenses began to decline. Now you will not spend. Initially they spend 1 crore, 2 crore, 3 crores, right? When Amazon came to India in 2014, 2014, right? When they came to India, they spent up the money, correct? To capture the market, to create the brand awareness. Now they have stopped it. Not totally stopped, but yes, expenses are reduced now. Correct? So marketing can only be done if you have 7 P's. Product होना चाहिए, उसके आप प्राइस रखोगे, प्रमोट करोगे, एक जगह होनी चाहिए. Place is a place from where you promote. Physical location, virtual location, where? People, there should be some people to buy it. Process, you have to define a marketing process. How will I sell? How will I promote it? And physical evidence. You need to show proofs, testimonials to your customers, okay, that this product will not fail. If you have this 7 P's of marketing in place, marketing will rock. Correct? So products will say, how can you develop your products or services? Promotion is how will you promote in? Through paid media channel, correct? How will you put up a price? आप price कैसे लगाओगे? कहाँ से distribute करोगे आप? Distribution options क्या रहेंगे? लोग क्या रहेंगे? Processes, okay? Existing business को आप कैसे manage करोगे? Okay? Ambience कैसा रहेगा आपके shop का? Store कैसा रहेगा? Right? You all go to malls, correct? हम सभी लोग malls में जाते हैं. We all go to malls on a weekends, right? Mostly. Why do we go to malls? Attraction, correct? The malls attract us, right? Good lighting, good ambience, right? Fantastic stores, offers, discounts. So we go to malls. Similarly, if your store has all these qualities into picture, marketing will work. People will be attracted towards your marketing, towards your business.
Now, there are two types of marketing, inbound and outbound. Traditional marketing is always outbound. Outbound, yani, let's say you're on a date, okay, with your wife, with your girlfriend, boyfriend, whatever, and you get a call, and you get a call coming in. Ring, hi, I'm calling from HDFC Bank. आपको कुछ लोन की जरूरत है क्या? Do you need a loan at 10% rate? Okay, then you'll say, oh my God, what nonsense is this, right? You're on a wonderful date with your wife or with your husband or with your girlfriend, boyfriend, whatever, and suddenly your privacy is disturbed. Okay, you don't like it, correct? We all don't like it. Calls coming in, we do not like it, right? So traditional marketing, which I'm going to study next, is always an outbound marketing. Digital marketing will always be inbound marketing. So inbound yani kya? Let people come towards your business. And this is only possible through digital way. This is traditional way. All clear till now? Any doubts, anyone? If there are any questions, please ask in the chat box. Any questions, anyone? It's all clear? Concept of marketing, advantages of marketing, right? Why should businesses do marketing, right? 7 P's of marketing, types of marketing. Right. Inbound is digital marketing because Mayuri, that you will see ahead. Digital marketing is called inbound because inbound marketing mein via digital marketing, you will attract people towards something called as fill in the blanks. वो आपको आगे पूछूंगा. You will attract people towards your business. Clear, everyone? Inbound marketing is, now this is the new way, or digital marketing, जब आप आगे पढ़ोगे, right, you will come to know that digital marketing is purely inbound only, which we are going to study further. यहाँ तक all are clear, right? किसी को यहाँ तक doubts नहीं है? Fair enough. So, old way of marketing is any marketing that pushes products and services to customers. मैं खुद कस्टमर के पास जाऊंगा, डोर टू डोर, करेक्ट? सेल्समैन आता है, डोर टू डोर, ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो एड्स, टेलीविजन एड्स, एक्सेट्रा. कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे. ओके, आप ही बात करोगे कस्टमर के साथ, कस्टमर आपके साथ आपस बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि एडवांटेजेस आगे आएंगे, डिसएडवांटेजेस आगे आएंगे. कस्टमर्स will watch your ad in TV, print media, etc. Marketer will provide little value. Marketer will rarely seek to entertain or educate. Outbound marketing will not come to educate, right? Correct? You will only come and sell the product. जो भी मेरे पास TVs है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, या केक बेकरी है, या आइसक्रीम फैक्ट्री है, whatever I have, directly products बेचूंगा. In contrast to this, inbound marketing में क्या होगा? Communication is two-way. I can talk to customer will talk to me. Customers will come to me via inbound marketing channels, which are also called as digital marketing channels. Marketers will provide a value, and digital marketers will always educate the customers on how to use the product. Why is the product good for them? Why should they use this particular product? Clear? Barabar? So, first step in marketing is you attract the people. Correct? So, strangers आएंगे. पहली बार जो आएंगे आपके शॉप पे स्ट्रेंजर रहेगा. Now, पहली बार आप मॉल में जाओगे, you are a stranger. वापस जाओगे आप. Now you become a repeat visitor. बार-बार जाओगे. Correct? So let's say मॉल में आप Decathlon everyone knows, right? A famous sports company, Decathlon. Possibly, it would be there. It's a famous sports store available in all the malls across India. बार-बार आप जाओगे. Now, they will try to
convince you. Correct? So ये product पे इतना offer है, ये product पे इतना sale है, इसके ऊपर इतना discount है. So you will start inquiring now. Once you got attracted towards the business, you repeatedly go to that business. Now you will start inquiring. What's the guarantee? कितना warranty है? कब तक चलेगा? Service कैसी है? Whom do I need to contact for maintenance, support? Leads coming in now. They will answer your questions satisfactorily. And you become satisfied. Okay. Once you become satisfied, you purchase the product. The deal is closed now. Now you will move from convert to close stage. Correct? Now they will not stop. Brands and all will not stop at close stage, right? Ola, Uber, सब लोग यहाँ पे रुकते नहीं. क्या करते हैं वो? They will provide you a delightful experience so that you are a brand promoter now. आप 10 लोगों को जाके बोलोगे WSQ-Tech provides best of digital marketing training. Okay? और जिन 10 लोगों को आप बोलोगे वो वापस क्या हो गए? स्ट्रेंजर हो गए. करेक्ट? They will come back to WSQ-Tech या Decathlon. वापस साइकिल चालू हो. वापस बार बार आएंगे, अट्रैक्ट हो गए, क्वेश्चन पूछेंगे, satisfactorily आंसर्स मिलेंगे, डील क्लोज होगी. ओके? They will become more delighted. वापस बाहर जाएंगे, they become brand promoters. Cycle will keep on continuing. Fifth point is digital marketing. Shivangshi will be coming to digital marketing. I'm just explaining the concept of marketing ताकि when I start digital marketing, you are absolutely sure कि marketing क्या है, 7 P's क्या है, marketing क्या है, why should you do marketing, what is the marketing process, so that your basic fundamentals are clear. Once it's clear, digital marketing is very easy to learn. It will also become clear. बराबर, everyone? Now, बरसों से since industrial revolution, people are using traditional marketing to do the business. Correct? So we are all aware now. Newspapers में ads दूंगा, televisions में ad दूंगा, face-to-face meetings करूंगा, direct marketing करूंगा, events और exhibitions में जाऊंगा, cold calling करूंगा, right? Telemarketing, fax, radio, यही channels मेरे पास थे अब तक. जब तक digital marketing invent नहीं हुआ था, आज से 10 साल पहले, तब तक मेरे पास यही channels थे. मुझे अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केटिंग करना है तो आई विल यूज दिस चैनल्स ओनली. तो ऑप्शन सही नहीं मेरे पास. टेम्पलेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पलेट्स, करेक्ट, एक्सेट्रा, राइट? सो द क्वेश्चन इज नाउ, व्हाई आर कंपनीज मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग? अभी सभी लोग को डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग? एनीवन? Traditional marketing के disadvantages क्या हो? Think and type in the chat box. Everyone, 2 minutes time. Harshal says more expenses in traditional marketing. Okay, high cost. Mayur says digital marketing is cost effective. Deepak says target selected audience. Brilliant point, Deepak. Perfect. Okay. Parikshit says more expensive. Okay. Internationally jati hai. Raki says digital marketing. Okay. Sujata says limited reach hai. Correct. Traditional marketing. Good, guys. Rest. Okay. Anup says it's good. That's it. बहुत सारे लोगों को आप रीच कर सकते हो. You can reach a lot of people in that time. Sandeep says traditional marketing can take longer to execute. Good point. Okay, Shivangshi. Rest. So disadvantages of traditional marketing are, as you all said correctly, why are companies now moving out from traditional marketing to digital marketing? Because traditional marketing has very high costs. An advertisement in the Times of India will cost you 10 lakhs. कपिल शर्मा शो के बीच में अगर आपको ad देनी है, it will cost you 25 lakhs.
huge budgets. So not affordable by everyone. Traditional marketing will not be affordable by everyone. Correct? Point number 2. No global reach. मुझे अगर मेरा बिजनेस ग्लोबली फैलाना है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से नहीं कर पाऊंगा. अगर करना चाहूंगा तो वापस कॉस्ट विल बी वेरी हाई. Perfect, Sujata. Pinpoint, you can target it through digital marketing. Correct. So global reach, cost will be high. Let's say I want to start my electronic store. मुझे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप अमेरिका में खोलनी है, जापान में खोलनी है, सब जगह खोलनी है. तो दो ही ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या है कि या तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा? What will I need to do? I will need to increase my visibility in US, in Japan. Only then people will come to know. Correct? So how will I increase visibility? 2 ways. Give ads in local newspapers. Right? And let people contact you on phone or WhatsApp, whatever. Second option is I partnership करूंगा या I will collaborate with local company vendor. Let's say इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक दुकानदार होगा, मैं उससे बात करके मेरा प्रोडक्ट उसको शिप करूंगा, वो बेचेगा. यानी I will establish dealership, distributorship. Again, cost high. Global reach possible नहीं है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में. Disadvantage number 3. You cannot reach the target audience. मुझे उन लोगों को ही ऐड दिखानी है जिनको फिलहाल टेलीविजन खरीदने में इंटरेस्ट है. मुझे बाकी लोगों को दिखाना ही नहीं. I would not like to show my ads to people who are not interested in buying television. Can I do it in traditional marketing? No, right? If I give ads in TV, सबको दिखेगा. If I give ads in newspaper, सबको दिखेगा. Target audience is not reachable. Disadvantage. Point number 4. 24/7 availability is not there. Traditional marketing, I have a physical store. I go in a shop in the morning 9 o'clock, come back in the evening 8 o'clock, right? No, so right now it's a COVID, right? Everybody will come back early. Say a customer wants to inquire about your product at 9 p.m. I'm not available. I lose the customer. चला गया ग्राहक, right? ग्राहक चला गया. Disadvantage. So this is point number 1. Point number 2, no global reach. Point number 3, target audience cannot be reached. Point number 4. Point number 5, ads are not flexible. Let's say आज मैंने एक ad दिया Times of India में, Madhulika Fashions. Okay, it's a good name in Rajasthan. You guys might have heard it. So Madhulika Fashions एक ad दिया, okay, of say selling Kota Doria sarees. Tomorrow, now after a while, okay, now ये ad उन्होंने दे दी Times of India के प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास चला गया. Now suddenly उनको रियलाइज होता है नहीं ये अभी फिलहाल सीजन नहीं है. I have given a wrong ad copy. I want to actually change my ad copy. They contact the Times of India marketing department and they say, no sir, please stop the printing of Kota Doria sarees ad, right? And start printing Rajasthani sarees. मैं आपको ये ad copy भेजूंगा, ये कल भेजना पेपर में. So what will Times of India say? Sorry, you know, the printing has begun and it's gone to the printing department. If you want to change your ad copy, give your ad once again, day after tomorrow, pay once again 10 lakhs. So I cannot change my ad copy. तो मुझे जब मेरी ad copy change करनी है, at that point of time, I will not be able to change it. Disadvantage है traditional marketing का.
बराबर. Sixth point, and a very important point, it is not measurable. You cannot measure your efforts you have put into traditional marketing, correct? तो traditional marketing में आपने जो भी efforts लगाया वो आप measure नहीं कर पाओगे measure. टाइम्स ऑफ इंडिया तो मैं सिर्फ एस्टिमेट कर पाऊंगा. अच्छा, मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दी है, तो मधुलिका फैशन विल ओनली एस्टिमेट के 10 लाख कॉपी प्रिंट हुई है, तो 10 लाख लोगों के घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया गया रहेगा. ओके, तो 10 लाख लोगों ने प्रोबेबली एड्स देखी होगी. एग्जैक्ट काउंट नहीं है, करेक्ट? So because of all these disadvantages, now businesses, right from brands to small businesses to medium enterprises, everybody has now shifted to digital marketing. Yeah, Sujata, that is a part of digital marketing. Google Analytics is not a part of traditional marketing. Okay, Google Analytics is a part of digital marketing. Correct? So everybody is now shifting to digital marketing. So now the question back to you guys is, what are the advantages of digital marketing? And before we go to what are the advantages of digital marketing, what do you define or what do you mean by digital marketing? What is the definition? How do you define digital marketing? Tell me in your own words, जो भी आपको समझ में आए वो आपके हिसाब से. ऐसा हाई फाई आंसर नहीं चाहिए, और गूगल पे सर्च मार के मत लिखना, पता चल जाएगा. So type in your own words, what do you understand by digital marketing? Now we come to main topic. Parikshit says smooth working. Okay, rest. Everybody will type in the chat box. I have muted everyone by force, okay, to avoid any interruption in between. It's easy way, target audience, making by digital medium, लोगों से connect होना, कम time में digital marketing करके. Shivanshi says okay, perfect Shivanshi. Social media, Rakshi, okay, Rakhi says okay. बाकी लोग promoting products on, brilliant point Deepak, promoting products on digital devices, correct? Cost effective way of targeting audience globally, right Ashish? It is a marketing through which everyone can buy and sell product through online portal, right Harshil? Okay. So digital marketing is defined as, now let's come to definition. Marketing your business services and products online using digital devices like laptops, desktops, mobile phones, computer applications, etc. Sorry, desktops, laptops, computers, mobile phones and tablets, etc. via a medium called as internet. So no internet, no digital marketing, full stop. So whenever you promote your business products and services online using these digital devices, correct, and you use internet, it is called as digital marketing. We all are in a digital marketing world now, correct? सबके पास smartphones है, laptops है, computers है, desktops है. Entire world is digitized now, correct? Hence the name digital marketing. Digital marketing is also called as internet marketing. It is also called as online marketing. क्यों ऑनलाइन मार्केटिंग? क्यों? बिकॉज हर एक चीज मैं ऑनलाइन अभी जाऊंगा. I will be going now in an online world. Internet is online, which you all know. Correct, Sandeep? Everything clear on definition of digital marketing? Right? तो जब भी आप अपने products and services online promote करोगे, that's called as digital marketing. So now the question comes back to you. Why are
Okay, what are the advantages of digital marketing? Which you all answer. So now, can I say one line answer? Can I say advantages of digital marketing are जितने भी traditional marketing के disadvantages है, okay, all the disadvantages of traditional marketing are automatically becoming or are automatically advantages of digital marketing. Can I say this? Who agrees to me? Who says yes? Who says no? I am saying all the disadvantages of traditional marketing automatically become advantages of digital marketing. Who agrees to my point? Sujata says yes, Parikshit says yes, Mayuri says yes, matlab rest says no, they don't agree. Ashish says yes, Shivanshi says yes, Rakhi says yes, okay. Anup says yes, okay. We have 21 people. 8 लोग ने reply किया, मतलब बाकी लोग are not agreeing. Sandeep says yes, Harshal says yes, okay. Agreed? Everybody now agrees, right? How? Let's prove it. So, first disadvantage of traditional marketing is high cost, correct? I can do digital marketing at low cost. जहाँ पे 10 लाख 20 लाख के बजट की बात होती है, डिजिटल मार्केटिंग में आप महीने का 15,000, 20,000, 25,000, 5,000 एक्सेट्रा ये बजट लगा के आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रमोट कर सकते हो ऑनलाइन. How? That's what we're going to study in the entire digital marketing course. तो आज का सेशन है what and why. How कैसे करना है वो तो how तो हमेशा चलते ही रहेगा. It will never stop. Second advantage. I can reach global audience. I can reach target audience. So how will I reach global audience? Anyone? What is required to do digital marketing? What is required? To do traditional marketing, I require a shop, right? मेरे पास एक दुकान होनी चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे, जो मैं बेचूंगा. करेक्ट? फिजिकली बेचूंगा. इंटरनेट इज करेक्ट, ऑब्वियसली. तो मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है, so what is the necessity? Without which you cannot do digital marketing. Yes, obviously, every internet way. Without internet, you cannot do anything in the world. Think. All the advantages, okay, 24/7 availability, okay, measurable, सारे advantages है, add flexibility, सब कुछ I can do it if I have what? Deepak says portal, okay. What's that portal called as, Deepak? Except Ashish, everyone will answer. Because he knows. Ashish answered already. Correct? So don't you think that digital marketing करने के लिए the most important thing which we need is a website, a business website. Correct? Business website will be your front face in internet. Internet क्या है? Collection of www बराबर. www is World Wide Web. World Wide Web क्या है? Collection of websites, right? Google.com website है. We tell it as search engine. Search engine एक category है. Social media category है. Ultimately website ही है. Facebook.com, Twitter.com, TimesOfIndia.com, WashingtonPost.com, etc. Correct? तो digital marketing करने के लिए the most and the foremost important thing is every business who wants to do digital marketing, he has to develop a website either by hook or by crook. Without the website, you cannot do digital marketing because without website, digital marketing चलेगा नहीं. आप internet पे क्या promote करोगे? How will you represent your business on internet? Right? So if I say if digital marketing is a body, correct? It's a body, human being. Website is a soul. Without soul, अगर आदमी में जान नहीं है तो that guy will not do anything. Correct? So the most important thing
to do digital marketing is website. Because you have a website, correct? Because you have a website, now all the advantages comes into picture. Website don't have any global boundaries, right? They are boundaryless. मैं इंडिया में बैठ के I can open up any website. I can find out what's happening in America. WashingtonPost.com. इंडिया में बैठ के I can find out विजय सेल्स ने क्या नए प्रोडक्ट्स निकाले अपने साइट के ऊपर. Global reach, right? So websites will get global audience, right? People will come from Japan, America, India, Africa, all the places, right? So what are you getting? You are getting something called as traffic. So the definition of traffic in digital marketing is, digital marketing में traffic का definition क्या है? Number of people coming on your website. Your website visitors is equal to traffic. It's called as traffic. तो जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा आपके साइट के ऊपर, उतना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा. जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा. जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपकी कंपनी को, उतना ज्यादा ब्रांडिंग होगी, अवेयरनेस होगी, एक्सेट्रा. Okay, so remember this term. Traffic is number of people coming to your website. Your website visitors is called as, in digital marketing terminology, it is called as traffic. Any questions, anyone? No questions? Shall I go ahead? Now, so because we have a website, right? Now, I can be, okay, I can reach my target audience also. Okay, जिसको खरीदना होगा वही आएगा, जिसको नहीं खरीदना होगा वो मेरे साइट पर आएगा नहीं. 24/7 I am available now. मैं रात को, या परीक्षित, ट्रैफिक इज नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू वेबसाइट, राइट? अगर आपके पास एक स्टोर है, ओके, फिजिकल बात करता हूं, अगर आपके पास एक स्टोर है, राइट, जितने लोग आपके दुकान में आएंगे मैं उनको ट्रैफिक बोल सकता हूँ, राइट? ट्रैफिक यानी यू डोंट कंसीडर दैट ट्रैफिक जामा. व्हीकल्स को ट्रैफिक नहीं बोलते, वो तो एक अलग डेफिनेशन है. जो भी चीज, ओके, ट्रैफिक यानी क्या कि एक्यूमुलेशन ऑफ पीपल, जहां पे सबसे ज्यादा लोग जमा हो जाएंगे उसका बोलेंगे ट्रैफिक. करेक्ट शिवांशी? सो आई कैन से कि नाउ मैंने जब ऐड दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत सारे लोग मेरे शॉप पे आ गए ऐड देखने. तो मॉल्स पे आप जाते हो, राइट? ओके, बैक सिग्नल मॉल्स. So you guys go to mall. So I can say malls is getting lot of traffic. बहुत सारे लोग जाते हैं. Okay, 50,000 लोग मॉल में गए, 10,000 लोग मॉल में गए वीकेंड पर. ट्रैफिक सेम कंसेप्ट ऑन योर वेबसाइट. कितने लोग आपके साइट के ऊपर आए, मॉल में कितने लोग गए वो मेजरेबल नहीं है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठ के गिनता नहीं है कितने लोग आए. वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए वो मेजरेबल है. That's why we are doing digital marketing. Clear? Shivansh and Parikshit both? Please say yes in the chat box. It's clear. Correct? So, अगर मेरे पास वेबसाइट है, I can be 24/7 available, right? I don't need to be present physically, right? I have opened up my website. Website is live. People will come. जब भी वो ऑर्डर करेंगे, से रात को 12 बजे किसी ने ऑर्डर किया, राइट? विजय सेल्स पे किसी ने रात को 12 बजे ऑर्डर किया. सुबह उठ के विजय सेल्स विल चेक द ईमेल, कितने लोगों ने वॉशिंग मशीन ऑर्डर की है, ऑर्डर विल बी शिप्ड. Customer has access to my business 24/7 only because I have a website. That's why जो पहला मॉड्यूल होगा जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग में WSQ टेक में, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू के बाद, which will go for 2-3 days, we will study how to develop a website. पहले आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे. सभी लोग, जितने भी यहाँ पे कोर्स में एनरोल हुए हैं, everybody will create their own website, and then after you have created website, you will learn कि उस वेबसाइट को भी कैसे प्रमोट करते हैं online. Make sense, everyone? Perfect? Correct? Because I have a website, now it is measurable. Exactly. I can measure the traffic coming to my website. How?
So digital marketing में I can measure the traffic by using a tool called as Google Analytics. I'll show you the tool, Google Analytics, right? So आप जब अपनी वेबसाइट बना लोगे and you go to googleanalytics.com, तो यहाँ पे let's say this website, ये client है हमारा myfarmaish.com, right? now मुझे ये जानना है कि myfarmaish.com पे कितने लोग आए, इतने ही नहीं, who is the audience, what is the age group, कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है, किस किस कंट्री से आया है, किस किस सिटी से आया है, क्या क्या उन्होंने ब्राउज किया, all the stuff I want to track, I can track it using a tool called as Google Analytics. That's why digital marketing is very important. Why? Because you can measure whatever efforts I am doing in marketing. Okay, let the tool open up. So you can exactly measure the efforts which you're doing in marketing through Google Analytics. It's one of the most widely used tools in digital marketing industry by all the digital marketers. Let me log in. Any questions, anyone? Please ask in the chat box. Any doubts, anyone? Is everyone clear? What is marketing? Why should you do marketing? What is digital marketing? What are the advantages of digital marketing? Okay. So it's opening up. Right. So I have a client, myfarmaish. So I go to myfarmaish. Okay. Now, myfarmaish mein I will come to know the data now. ट्रैफिक कितना आया, नंबर ऑफ यूजर्स कितना आया पिछले 7 दिनों में, ये नीचे है, पिछले 7 दिन लिखे हुए हैं. कितने लोग आए? 378. ओके. नाउ कहां से आए? लेट्स सी. किस टाइम पे आए? Okay, come on, this particular point. Now, okay, these are the number of days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. X-axis है. Y-axis पे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, रात को 11 बजे, 12 से. सबसे ज्यादा लोग कौन से टाइम पे आते हैं? ये डार्क ब्लू जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग दिखते हैं. देखो, तो यहाँ पे डार्क ब्लू कहाँ पे दिखता है मुझे? सैटरडे आता है. तो सैटरडे पीपल आर मोर फ्री टू ब्राउज इंटरनेट. 37 पीपल केम एट 7 PM. सैटरडे वापस 12 बजे दोपहर को 31 पीपल केम. संडेज मंडेज को इतना ज्यादा ट्रैफिक होता नहीं है क्योंकि लोग इतने शॉपिंग के मूड में होते नहीं. तो व्हाट आई कंक्लूड इज नाउ, मुझे कंक्लूजन क्या मिला यहाँ से कि सैटरडे इज माय डे. मैं अगर सैटरडे को एक दिन का कैंपेन चलाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स यूज करके, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो मुझे मैक्सिमम ट्रैफिक आएगा, मैक्सिमम लोग मेरे साइट पे आएंगे और मुझे मैक्सिमम सेल्स मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये डेटा मुझे ऐसा दिखा रहा है.
बराबर है, क्लियर एकदम, ओके। देयर इज नो गट फीलिंग, ऐसा मैं हवा बात नहीं कर रहा, आई एम गोइंग विद द डेटा, जो मुझे गूगल डेटा दिखाता है वो हिसाब से आई विल प्लान आउट नाउ माय कैंपेन। फिर yeah, it's only Google Analytics, that's the best tool which you use, बाकी tools है ना, we don't focus on that। इंडिया मैक्सिमम लोग कितना कहाँ से आया, इंडिया से 93% ट्रैफिक जो मेरे साइट पे आया था वो इंडिया से आया। तो मैंने बताया था कि वेबसाइट्स आर बाउंड्रीलेस, राइट, दे डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, फॉलोड बाय यूएस, कनाडा and all the countries they are coming from। how many people came from mobile? 81% people जिन्होंने myfarmaish.com को हिट किया वो मोबाइल फोन से आया, 18% लोग डेस्कटॉप से आए फॉर बेटर। So what I conclude कि मैक्सिमम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं फोन के ऊपर, आई विल टारगेट माय ऑडियंस ऑन फोन। दिस विल स्टडी इन डिटेल, आज से फर्स्ट डे तो आई एम जस्ट मूवी। नीचे जाऊंगा मैं तो आई कैन कम टू नो कौन से पेज पे गए, होम पेज पे कितने लोग आए, ऑर्डर पेज के ऊपर कितने लोग गए, चेकआउट पेज के ऊपर कितने लोग गए, कितने लोग ने कार्ट ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मिठाई खरीदी, स्टेपल फूड, राइट, और ऐसे सीजनिंग एंड स्पाइसेस पे गया मैं और आई क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट बटन मैंने क्लिक किया बराबर, और मैंने साइट यहाँ से क्लोज कर दी। कितने लोग ने ऐसा किया? 81 people। I can track it now, correct? So it's measurable। डिजिटल मार्केटिंग के आपके एफर्ट्स मेजरेबल हुए अभी, ऑल अग्री? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यू कैन नॉट मेजर लाइक दिस, राइट, यू कैन नॉट मेजर, बराबर है। कितने लोग आपके ऐड देख के आए, तो आप जो भी कस्टमर आपके शॉप पे आएगा आप थोड़ी उनको पूछोगे सर आप कहाँ से आए, तो पहली बार वो खरीदने का है, फर्स्ट टाइम इज कमिंग टू माय शॉप टू आस्क समथिंग, सो आई विल नॉट आस्क हिम तो वेयर ही हैज कम, आई विल डायरेक्टली टेल हिम व्हाट ही वांट्स, करेक्ट? सो यू कैन नॉट मेजर, हियर यू कैन मेजर लाइक दिस। All clear? And the last advantage is my ad copies are flexible. So let's say on today on Facebook, I am running ad of television. I don't like television ads now. I want to promote washing machine. I will promote washing machine tomorrow without paying a single penny on ad copy। बिना एक पैसा खर्च किए, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई हैव टू पे वंस अगेन 10 लाख, ऐसा नहीं है। वही जो मेरा बजट होगा 15,000, 20,000, 25,000 का, उसी बजट में मैं मल्टीपल एड कॉपीज बना के आई कैन शो इट टू माय कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स जिनको इंटरेस्ट है। पेनी यानी पैसा, संदीप, पेनी यानी पैसा। नाउ यू ऑल एग्री कि वेबसाइट होनी चाहिए, बराबर, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सारे एडवांटेजेस है, मैं मेजर कर सकता हूँ, मैं मेरा बिजनेस ऑनलाइन प्रमोट कर सकता हूँ, ओके, कम पैसे में मैक्सिमम लोगों को मैं मेरे एड्स दिखा सकता हूँ, करेक्ट, करेक्ट। सो नाउ जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स है, डोंट यू थिंक कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए भी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स होने चाहिए ना, राइट? We should have digital marketing channels also, right? So what are the digital marketing channels which you will use to promote what? Because digital marketing is now online, you are coming on to online world, तो अभी आपके पास बिजनेस रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही चीज है, which is your business website. So what are the digital marketing channels? Everyone will type in the chat box as per their knowledge. Facebook, Twitter, Instagram, social media, okay, rest digital marketing channels कौन सी है?
Okay, entire social media fine. Google AdWords correct. फिर उसके बाद after that, after WhatsApp, okay, YouTube, okay, Instagram, all right. Android app, okay. Android app is a again business application. Channel नहीं है वो. Email, fantastic point. Okay, Mayuri, good. Email marketing, blogging, very good point. Okay. So traditional marketing channels you all know, right? Newspaper ads, radio ads, television ads, pamphlets, hoardings, direct sales team, events and exhibition. ये जगह पे जाकर मैं प्रमोट कर सकता हूँ. Pinterest, etc. Okay. So digital marketing channels. अभी अगर मुझे मेरी वेबसाइट प्रमोट करनी है, okay, if I want to promote my website, the different digital marketing channels which I will use are number one, email marketing. I will promote my business through email marketing. Number two, SEO, search engine optimization. Number three, Google AdWords is called as PPC, pay per click. I will explain you all this stuff you'll study in the course. Next, I will फिलहाल आज overview में jot down कर रहा हूँ. Fourth, social media marketing. Social media में you have Facebook, you have Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, and the most famous. Correct? Next, you have lead generation. How do you generate leads? Next, you have video marketing. You have content marketing. बराबर है. आज के ज़माने में इंटरनेट पे क्या मिलता है आपको? Content मिलता है, right? Whatever website you go, website will have a content, right? If you go to any website, there is a content, right? Image is there. English में कुछ लिखा हुआ है. All these are content, correct? All these are content, right? Content marketing you will do. E-commerce marketing. E-commerce यानी Amazon, Flipkart. Online display advertising. See the options you have now. The options you have to promote your business website are this much. Affiliate marketing. There is one more. Mobile marketing. Correct? इतनी सारी चीजें है मेरे पास. If I want to promote तो my business website, तो flow कैसा है? First I'll create a business website and I will learn how to promote that particular business website. उस वेबसाइट को मैं कैसे प्रमोट करूंगा? Using these digital marketing channels, which will be a part of your curriculum. बराबर है? All are clear? Correct? आज के लिए इतना काफी है? Shall I go ahead? Is the download enough for today or shall I go ahead? Yes, no, maybe. Okay. Now, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे मुझे विजिबिलिटी बढ़ानी थी, तो विजिबिलिटी विल बी एप्लीकेबल टू बोथ. हाँ, ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग दोनों जगह विजिबिलिटी एप्लीकेबल होगी. थैंक्स संदीप. करेक्ट. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में विजिबिलिटी बढ़ाना कैसा है ये हमने सीख लिया, न्यूज़पेपर ऐड देके ये सारी चीजें करके. डिजिटल मार्केटिंग में अगर मुझे विजिबिलिटी बढ़ानी है तो हाउ विल आई इंक्रीज माय विजिबिलिटी? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आई हैव ओनली वन थिंग व्हिच इज business website. So how will I increase visibility in digital marketing? Now, so digital marketing में
ट्रैफिक सबसे ज्यादा कहां पे आता है? ट्रैफिक यानी लोग सबसे ज्यादा क्या ब्राउज करता है? दो चीजें, राइट? पीपल ब्राउज टू थिंग्स मोर फ्रीक्वेंटली इन ऑनलाइन वर्ल्ड. वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग. सर्च इंजन आपको पता है, राइट? यू ऑल नो गूगल, याहू, बिंग. इसके अलावा भी there are a lot of search engines. Normally you have 35 plus search engines. You have Yandex, EOL, you have Baidu, etc. Second is visibility. दूसरी जगह कहाँ बढ़ेगी? जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक आता है. ट्रैफिक यानी नंबर ऑफ पीपल कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. कितने लोग आते हैं? सर्च इंजन से बहुत से लोग जाते हैं, राइट? एवरीबडी सर्च इज ऑन गूगल. दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. So if I want to increase my visibility, I will have to increase it on these two platforms, search engines and social media. Why? क्योंकि 99% of traffic globally इन्हीं दो जगह पे आता है. या तो कोई सर्च इंजन पे जाएगा या सोशल मीडिया पे जाएगा. Followed by other things. Correct? So the question is now, how will I make my website visible in search engine? Correct? So let's take an example. Any questions anyone has? Yes, no, maybe? Okay, so let's say this is search engine, right? This is Google. This is Google, right? Now, let's say मैंने आज एक वेबसाइट डेवलप की. madhulikafashions.com for example. Okay, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई. Now, मुझे जो भी मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की या शोरूम की, दैट पर्टिकुलर वेबसाइट आई वांट टू प्रमोट ऑन गूगल. ओके, तो लोग क्या करेंगे? लोग पहले गूगल पे आके सर्च करेंगे कि बाइंग टेलीविजन ऑनलाइन. बराबर? सभी लोग ऐसे सर्च करते हैं, राइट? यू गॉट द सर्च इंजन. तो सर्च इंजन पे मैं क्यों जाऊंगा? व्हेनेवर आई वांट एनी आंसर. जब मुझे कोई आंसर चाहिए तो आई गो टू सर्च इंजन. तो दिस इज कॉल्ड एज इनबाउंड मार्केटिंग. नाउ inbound marketing, I am going to Google to find out an answer from a particular website. So if I say buy television online, that means मुझे ये जानना है how many people are selling television online. It means indirectly कितना लोगों ने टेलीविजन बेचने के लिए वेबसाइट बनाई है. Reliance Digital.in, Flipkart, Amazon, Paytm Mall, Tata Click, ये सारी चीजें. आगे रिजल्ट आ गए गूगल से. करेक्ट? ना तो विजिबिलिटी किसकी है? ये गूगल का फर्स्ट पेज है और गूगल ने मुझे 51 सेकंड्स में कितना रिजल्ट दिए? यू नीड 10, 100,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़ 90 लाख रिजल्ट दिए. यानी क्या? गूगल ने 21 करोड़ 90 लाख वेबसाइट्स गूगल के डेटाबेस में है जो गूगल ने 51 सेकंड में पिंग करके मुझे शो किए. लेकिन मुझे कितने दिखते हैं? इतने ही दिखते हैं. क्यों? क्योंकि ये गूगल का फर्स्ट पेज है. Yes, it does. Shivanshi, it does. People use incognito mode as well. Even that data is fetched, from the IP address, and if they are logging to Gmail, it will be. So it will go into unknown category. Now, मैंने यहाँ पे टाइप किया कुछ बराबर और मुझे यहाँ पे 21 करोड़ रिजल्ट है. यानी क्या? 21 करोड़ वेबसाइट है. तो मैं अगर कर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की वेबसाइट बनाऊंगा तो मेरा नंबर क्या होगा? 21 करोड़ 90 लाख 1. बराबर? तो यानी मेरा आगे 21 करोड़ 90 लाख वेबसाइट है जिसके साथ मुझे कंपटीशन करना है. राइट? सो नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गूगल कि सारे के सारे रिजल्ट्स जो आप दिख रहे हैं वो फर्स्ट पेज पे दिखाते हैं. पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल. ये गूगल का फर्स्ट पेज है, राइट? यू ऑल ब्राउज, यू कम टिल डाउन. ये गूगल का फर्स्ट पेज है. तो क्या करेगा? ये रिजल्ट्स को स्प्लिट करेगा. किसी को पेज नंबर 2 पे डालेगा,
किसी को पेज नंबर, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे भी रिजल्ट है, करेक्ट। अगर आप पेज नंबर 2 पे जाओगे तो भी यहाँ पे रिजल्ट दिखेंगे, करेक्ट। प्राइस देखो 91 मोबाइल बजाज, पेज नंबर 3 पे भी है रिजल्ट, पेज नंबर 10 पे भी रिजल्ट हैं, करेक्ट। पीपल आर ऑन पेज नंबर 10 ऑल्सो। सो नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि जो लोग पेज नंबर 10 पे है, जिनकी वेबसाइट पेज नंबर 10 पे है, रिजल्ट गूगल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है, तो गूगल विल शो इट, इट हैज टू शो इट। द पॉइंट इज कि जिनकी वेबसाइट पेज नंबर 10 पे है, इज एवरीवन्स वेबसाइट विजिबल टू पब्लिक? जिनकी वेबसाइट पेज नंबर 10 पे है, उनकी वेबसाइट लोगों को पता है क्या? यस, नो? Okay, Harshal says no. No, 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 no. Okay. Why? Why you guys say no? Okay. Why you guys say no? जो लोग पेज नंबर 10 को, पेज नंबर 10 में भी रिजल्ट है, फैंटास्टिक आंसर हर्षल। क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेज नंबर 1 से कोई पेज नंबर 10 पे जाता ही नहीं। आप में से कितने लोग ब्राउज करते हैं पेज नंबर 1 के बाद? हाउ मेनी पीपल गो टू इवन पेज नंबर 2? नोबडी गोस, राइट? So 99.99% of traffic कहां पे आता है? पेज नंबर 1 पे। यानी 99% of people will stop at page number 1. So now what about people who are on page number 10 and 8 and 5? They're lacking visibility. Now because I came to page number 10, now I come to know that vutvs.com करके एक वेबसाइट है जो टेलीविजन बेचता है, बराबर है। क्योंकि मैं पेज नंबर 10 पे आया तो मुझे पता चला। अगर मैं आता ही नहीं था और मैं अगर पेज नंबर 1 पे ही रहता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि आई वुड हैव नॉट कम टू नो ओनली दैट VUTVs करके भी कोई वेबसाइट है, क्योंकि पेज नंबर 1 पे वही नहीं। सो व्हाट्स द चैलेंज नाउ? जो लोग भी पेज नंबर 1 के बाहर है, everybody is after page number 1, the challenge for them is everybody who is after page, जो भी लोग पेज नंबर 1 से दूसरे या तीसरे या चौथे या पांचवें 10वें 100 1000 2000 जितने पेज पे, उनके लिए चैलेंज क्या है? पेज नंबर 1 पे आना, करेक्ट। Everybody wants to come on page number 1. Why? Because the traffic is on page number 1. Everybody is on page number 1, the traffic is on page number 1. People do not browse after page number 1. So I will also have to take my website. If I'm an electronics dealer, if I develop a website today, मुझे भी मेरी वेबसाइट पेज नंबर 1 पे लेके आनी पड़ेगी। तो क्या होगा? Now I am into something called as competition. Now I need to compete, correct? क्योंकि Google is not my father's property, neither it's your father's property, right? So everybody wants to come on page number 1. So the goal of every website is to come on page number 1, but everybody do not make it to page number 1. You all agree, right? सबका गोल है पेज नंबर 1 पे आना, लेकिन हर एक स्टूडेंट फर्स्ट नहीं आता है, एक ही आदमी आता है फर्स्ट, करेक्ट? तो पेज नंबर 1 पे हर आदमी आ नहीं सकता है। नाउ जिनको पेज नंबर 1 पे आना है, सो नाउ गूगल सर्च इंजन है, रिजल्ट चलाएंगे, उनको उनकी कंपनी चलानी है। तो गूगल ने क्या बोला? ऑलराइट, those who want to come on page number 1, they have 2 options. Option number 1, okay? Option number 1 from Google is, Google says, you pay me the money, आप मुझे पैसा दो, I will put you on page number 1. How many of you knew this? कि Google पैसा लेता है? Did you all knew that Google charges the money to get websites on page number 1? Everybody knows. All right, good. So now I have money. Okay, I have a budget. 50,000 का मेरा budget है. I will give money to Google, and Google will put my website on page number 1. So if you search here, correct? Now if you search here, digital marketing agency, for example, you will see, let's say you search digital marketing agency in London or in San Francisco, Dubai, okay? और की वजह का वापस गूगल रिजल्ट दिखाएगा मुझे 22 करोड़ 22 लाख रिजल्ट आए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे। यानी क्या
कि 2,22,00,000 वेबसाइट्स है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है ग्लोबली, करेक्ट? और उनमें से पहले पेज पे इतने लोग हैं, तो गूगल क्या बोलता है, जिनको फर्स्ट पेज पे आना है मुझे पैसा दो। तो यहाँ पे आपको यू सी दिस, यू विल सी ऐड ओवर हियर, यहाँ पे आपको ऐड दिखता है, यहाँ भी आपको ऐड दिखता है, यहाँ भी आपको ऐड दिखता है। इफ यू गो डाउन यू विल सी ऐड ओवर हियर आल्सो, करेक्ट? तो 4 जगह पे यू सॉ द एड, राइट? नाउ इफ यू गो डाउन, यहाँ पे ओके, यहाँ पे ऐड 1 2 3 4 एड्स, यहाँ पे देयर इज नो ऐड, देयर इज नो ऐड हियर, करेक्ट? वापस आप जाओगे नीचे तो वापस ऐड दिखेगी 1 2 3, क्लियर, राइट? So what does this mean? That the glassberry.com, phxandtom.com, wowsocial.ae, ये सारे लोगों ने गूगल को पैसा दिया है तो फर्स्ट पेज पाने के लिए। This process, why you want to come on first page? To get increase visibility, बराबर है? उनका गोल है कि मुझे विजिबल होना है, नहीं तो पेज नंबर 10 पे ही पड़े रहेंगे, कोई जाएगा नहीं पेज नंबर 10 पे। तो पेज नंबर 10 पे अगर कोई जाएगा नहीं तो आपके वेबसाइट के ऊपर लोग क्लिक करेंगे नहीं आपकी, ओके, और आपको ट्रैफिक आएगा नहीं। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, राइट? पीपल विल नॉट गो टू पेज नंबर 10, दे विल नॉट सी योर वेबसाइट, दे विल नॉट क्लिक, यू विल नॉट गेट ट्रैफिक। People will click on this ads over here, these guys will start getting the traffic now, right? So they are getting maximum visibility, This process of paying the money to Google and coming on first page to make your business website visible is what is called as Google AdWords, pay per click. Why pay per click? क्योंकि every time जितनी बार एक आदमी इसके ऊपर क्लिक करेगा या इसके ऊपर क्लिक करेगा, वाव सोशल एवरी टाइम पैसा पे करेगा गूगल को, वट एवर, ₹1 पर क्लिक, ₹2 पर क्लिक, ₹10 पर क्लिक, वट एवर इज द डील. First option to come on first page of Google is pay the money to Google and come on first page. Is this option clear, everyone? Any doubts here? The goal is visibility. Yeah? I cannot stay on page number 10. मेरे को मतलब ही नहीं है, वेबसाइट बनाया मैंने इतना खर्चा किया, and I'm on page number 10. नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा. All clear? Okay. One way of coming on page number 1 is pay the money to Google and come on page number 1. Now, you say that no sir, I don't have any money to pay to Google, पर मुझे फ्री में ऊपर आना. हाँ लगता है. No, that's an ad copy. Ad copy you give Parikshit only for the first page. But जो लोग first page पे नहीं आ पाते, उनके ad Google second page पे दिखाते हैं. That's okay. But you're not charged ना. यहाँ पे ad दिखाने का पैसा नहीं है. 50,000 बार आपकी ad दिखेगी, एक पैसा काटेगा नहीं गूगल अगर किसी एक आदमी ने भी क्लिक नहीं किया. Remember this, huh? 50,000 बार, 50,000 times your ad is shown. Not a single time your ad will be, not a single time you will be charged by Google if nobody clicks. If somebody clicks, only then you are charged. If nobody clicks, you're not charged. You get branding for free. Wonderful, right? मुझे फ्री में मेरा ब्रांडिंग हो रहा है. If nobody clicks, why should I pay the money to Google? Okay. Now, option number 2. Maybe you will say, "Sir, I don't have any money. मुझे फ्री में ऊपर आना. I want to come on free." So Google says, "Fine, no worries. If you want to come for free, then I will not do the hard work. You give me the money. Yani you give the money. Car is serviced in the car showroom. बराबर है? मैं मेंटेनेंस पे उसको पैसे दे दूंगा, so the car will be get serviced in the car showroom. वो मैकेनिक काम करेगा. मैं पैसे नहीं दूंगा कार सर्विसिंग करने के लिए, तो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? गूगल सेज फाइन, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो अभी आप खुद काम करो, मैं आपको एक गाइडलाइंस देता हूं. आई विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज गाइडलाइंस. कौन सी गाइडलाइंस? ओके, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की. आई विल गिव यू गाइडलाइंस फॉर ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट. ओके, ऑप्टिमाइजिंग द गाइडलाइन यानी गूगल बोलेगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर, ओके, फर्स्ट योर वेबसाइट शुड लुक ब्यूटीफुल, करेक्ट. सेकंड पॉइंट इज योर वेबसाइट शुड हैव अ यूनिक कंटेंट. आपने इधर से कॉपी पेस्ट कंटेंट किया रहेगा तो गाइडलाइंस में आप बाहर है, आपको मैं रैंक नहीं करूंगा.
You should write unique content only. Images should be good. Videos should be good. All should be uniquely created by you. Copy and paste चलेगा नहीं. अगर ये आप ये सारे guidelines follow करते हो मेरे, once you follow all my guidelines, I will check your website, and if I feel that you have completely 100% followed my guideline, I will rank you on first page. But that will not be immediately, हाँ? Immediately नहीं होगा. आप मुझे पैसा दोगे तो मैं आपको आधे घंटे में फर्स्ट पेज पे लाके रख दूंगा. अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आप काम करते जाओ. आप मेरी गाइडलाइंस फॉलो करते जाओ. 3 से 6 महीने का मैं आपको टाइम देता हूँ. कितना? 3 से 6 महीने. 3 से 6 महीने तक आप मेरी गाइडलाइंस ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, मेरे पास लिस्ट है. ओके, गूगल के पास लिस्ट है. ये टिक 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 साइट के ऊपर ये सारी चीजें. ओके, डन. ये सारी चीजें अगर आपकी साइट पे होगी तो 3 से 6 महीने का टाइम देता हूं मैं आपको. यू वर्क फॉर 3 to 6 months. After 3 to 6 months, I will visit your website once again on page number 10. और मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मेरी गाइडलाइंस फॉलो की है, so I will put you from page number 10 to page number 1. Free वाला ऑप्शन. यानी मेहनत मजदूरी करके ऊपर आना. फ्री वाला ऑप्शन है. This process of optimizing your website according to Google guidelines and coming on first page of Google free is what is called as search engine optimization. तो विजिबिलिटी बढ़ाने के सर्च इंजिन्स में 2 ही ऑप्शंस है. पैसा देके आओ ऊपर या बिना पैसे देके आओ. ऊपर तो आना है. तीसरा ऑप्शन नहीं. So all these people whom you see, जहां पे ऐड नहीं लगी हुई है, करेक्ट, यहाँ पे ऐड लगी हुई है, राइट. एडी यानी ऐड वाला हमेशा टॉप पे रहेगा. तो उसके नीचे देखो यहाँ पे ऐड नहीं है, ये मेहनत करके ऊपर है. डिजिटल एजेंसी नेटवर्क, डिजिटल अनकवर, ये सारे लोग जो आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहे हैं, उन्होंने गूगल के गाइडलाइंस फॉलो किए. 3 से 6 महीने का टाइम लिया, तब जाके जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दुबई सर्च करेगा, ये लोग फर्स्ट पेज पे दिखेंगे. उनके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक फ्री में आ गया. क्लिक करेगा तो पैसा तो देना ही नहीं है, राइट. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मार्केटिंग, which is called as search engine optimization. So only 2 options you have to come on first page of Google. Either you pay the money and come, or you don't pay the money and come. Difference क्या है दोनों में? पे करोगे तो इमीडिएटली आओगे टॉप पे, नहीं पे करोगे तो आपको रुकना पड़ेगा 3 से 6 महीना. 3 से 6 महीने का टाइम लेंगे आप जिस दिन से वेबसाइट लॉन्च करोगे. If I am launching the website today, January, February, March, April, by April 30th, I should come on first page. If not, May, June, July, by July 2021, my website will start running on first page, provided I am optimizing as per the Google guidelines. Now you get visibility because you're on first page. Now you get traffic because people will search. बराबर है, लोग सर्च करेंगे. Now this is called as inbound marketing. Full marketing क्यों? क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ लोगों के पास. I am not advertising. I am only putting my website on first page of Google. Let the person come and search. Let him see my website. Let him click. He will come on my website like this. और वाकई फिर मुझे कांटेक्ट करेगा, मेरे से बात करेगा. Inbound marketing, digital marketing is now inbound. Is the concept clear, everyone? Traditional marketing में ये possible है? Not possible, right? Cool. Now, so I stop the session here today. Okay. Tomorrow we will see how do you increase your visibility on social media marketing, on social media platforms. Search engines आज हमने visible किया, right? So you all are clear कैसे टॉप पे आना है. या तो SEO यूज करो या Google Ads यूज करो. कैसे यूज करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम. तो कैसे भी चलाना है और कैसे फर्स्ट पेज पे रैंक कराना है. कल हम देखेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है. And we go with the digital marketing process tomorrow as well. So tomorrow, can you guys come at 6:45? Because I have to go at 8 o'clock. So we'll end the class by 8. 6:45 we can begin tomorrow. Everyone, right? So tomorrow time is 6:45. Make sure that you come by 6:45, and I'll start the class. And now here I'll start the session. Any questions anyone has?
please type in the chat box. I am waiting. If you have not understood anything, Umbir says 7 p.m. Okay. All right, Umbir, no worries. You know the sessions are getting recorded, Umbir. So आपको recordings मिल जाएगी. Before you all go, can you all guys type your email address in the chat box so that I can send you the recording of today, so that you can refer it once again. आप refer कर सकते हो उसको. चलेगा, okay. 7 बजे रखते हैं because maximum people are of 7 p.m. We'll start at 7 p.m. only. Okay, time is 7 p.m. only tomorrow. Everyone. So let me make a list of your email addresses so that I can send you recording. So Nikita का है मेरे पास email address. Second is Shivmukh. There is Harshal. Fifth one is Mayur. Deepak. Ashish. Group. Yeah, Umbir, no worries. The class will begin at 7 p.m. as scheduled, okay? Tomorrow. PPT, I'm not able to share it because that's something very confidential. Yeah, but you can have a look at the recording. I'll show you the WhatsApp notes. ये जो मैंने notes बनाया है वो मैं आपको share कर देता हूँ. Okay, this I'll share. संदीप का है. कितने लोग ही है? Okay, that's it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 लोग हैं मेरे पास, ओके? मेरे पास इस 11 लोग के ईमेल एड्रेस आया है. Right? So I'll be sending the recording to all these 11 people. Any questions, anyone? What do you want to ask in regards to digital marketing? जो भी आपको questions हो, you can ask. So make sure you all join from laptops, हाँ, ताकि आप बराबर टाइप कर पाओ चैट पे. नहीं हो तो फोन भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. Which keyboard? Okay, हिंदी में लेक्चर. Okay, Umbir, no worries. हिंदी में करूँगा. Everybody is comfortable with हिंदी या किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है तो फिर मैं एक ही लैंग्वेज यूज करूँगा हिंदी सबके लिए. सबके लिए हिंदी is good, right? बराबर है? Is there anyone in the class who does not understand Hindi and use only English? Because people from South India, अगर कोई है South India वाला तो उसको दिक्कत आएगी हिंदी समझने में. हिंदी everybody is okay, right? ठीक है, तो कल से we will go with Hindi only. That's fine. अच्छा, ये वाला कीवर्ड लिस्ट, हाँ वो आप सीखोगे, don't worry. Shivangi, that you will learn in SEO. Today is the first lecture, first day. Don't worry, don't rush. You will learn it. आप लोग समझ जाओगे. ये जो आपको कीवर्ड्स की लिस्ट जो आपको दिखती है राइट साइड पे वो आपको दिख जाएगी. You will see it. In SEO मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लिस्ट आती है. ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन will be Hindi henceforth for the entire batch. I don't think anyone has any problem, right? सबको हिंदी समझ में आएगी बराबर. ठीक है. All right then, no question anyone. See you guys tomorrow. Tata. कल 7 बजे क्लास है. Everyone है, कल 7 बजे क्लास है. क्लास 7 बजे ही है. जो टाइम है वही टाइम पे क्लास कर लूँ. 7 o'clock, 7 p.m. Thank you all. Tata. Bye bye. Good night. See you. Bye bye.